Hello, my dear students. Omni School presents online classes through my channel Maths Take It Easy. Hi, I'm Mohammad Haris Mansoori and I'm taking your mathematics subject. Please like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel Maths Take It Easy. Let's start with our video and our subject. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Now in this video we are going to learn rational numbers between two rational numbers. Okay, so as I told in the previous video, we can find or we can write as many as numbers in between two rational numbers. Okay, because there are infinitely many rational numbers. Okay, now here let's start. Can you tell the natural numbers between 1 and 5? How many natural numbers between 1 and 5? So there are 2, 3 and 4. Now, how many natural numbers between 1 and 5? We have 2, 3 and 4. Okay. Now, how many natural numbers are there between 7 and 9? So only one number, that is 8. Now that how many natural numbers are there between 10 and 11? Obviously none, because between 10 and 11 we have no natural numbers. Okay, because they are consecutive numbers. Consecutive numbers means what? The next number comes after the previous number. Okay, so that is called uh, consecutive numbers. Now so there is nothing between 10 and 11. Now next, list the integers that lie between -5 and 4. So -5 and 4. So how many numbers integers between them? So let us write -4, then -5, then -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay, so there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 integers between -5 and 4. Okay, now next, how many integers are there between -1 and 1? So -1 and 1, how many integers? So we have one integer, that is 0. Okay, so yes, of course we can find any numbers between but in integer natural numbers we may find one number or we may find nothing between any two numbers, but in rational numbers we 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 have many rational numbers. Okay, there there are many numbers between any two natural numbers or any two rational numbers. The rational numbers are indefinite between any two numbers. Okay, so we can find as many numbers as we can. Now how many rational numbers are there between 3 by 10 and 7 by 10? Okay, so 3 by 10 we write here and 7 by 10. So how many rational numbers can we find? Yes, so after 3 by 7, 3 by 10, we have 4 by 10, then 5 by 10, then 6 by 10. Okay, so we have found here only 3 numbers. Now but if we want to find many numbers, so how can we see? 3 by 7, 3 by 7 and 7 by 3 by 10 here and here 7 by 10. Okay, how can you find more numbers? Okay, so let us write equivalent number. 3 by 10 is equivalent to 30 by 100. Okay, and here 7 by 10 is 70 by 100. Okay, we multiplied 3 by 10 and 10 by 10, so 3 into 10 30, 10 into 10 100. The same way here we have multiplied 7 by 10 and 10 by 10, so 7 by 10 is 70 and 10 by 10 is 100. Now how many numbers can we find between 30 by 100 and 70 by 100? So we can find 31 by 100. Okay, 32 by 100,
33 by 100, and last so on up to 66 by 100, 67 by 100, 68 by 100, then 69 by 100. Okay, so similarly we can find that these many numbers, okay, between 3 by 10 and 7 by 10. Now they have written 31 by 100, 32 by 100, 33 by 100 and 68 by 100, 69 by 100 are all between 3 by 10 and 7 by 10. Yes, because we write equivalent number here and equivalent number here. Okay, यहाँ पे 3 by 10 और 7 by 10 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे 3 by 10 और 7 by 10, सो हमें सिर्फ 3 नंबर मिलते हैं, 4 by 10, 5 by 10 एंड 6 by 10. अब हमें अगर ज़्यादा नंबर चाहिए, समझो यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर्स मिले, हमें ज़्यादा नंबर चाहिए तो हमें क्या करेंगे, 3 by 10 को इक्विवेलेंट नंबर बनाएंगे, यानी कि 3 by 10 को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 10s are 30 एंड 10 10s are 100. ओके, इसी तरह 7 by 10 को भी इक्विवेलेंट नंबर बनाएंगे. सो 7 into 10 अपॉन 10 into 10. So 7 10s are 70 upon 10 10s are 100. So now we can find many numbers between 30 by 100 and 70 by 100. Those are written here: 31 by 100, 32 by 100, 33 by 100, and so on, and then up to 68 by 100, 69 by 100. Okay, so how many numbers we have? So there are 39 numbers. Okay, now if we want to find more numbers between 3 by 10 and 7 by 10, हमें और ज़्यादा नंबर चाहिए, सिर्फ 39 नंबर्स नहीं चाहिए, और ज़्यादा नंबर चाहिए, तो हम और भी कर सकते हैं. हम 3 by 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो कैसे करेंगे, 3 by 10 को अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, सो 10 को भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर आएगा 3000 अपॉन 10,000. इसी तरह 7 by 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर है 7000 अपॉन 10,000. Okay, now how many numbers can we write between 3000 upon 10,000 and 7000 upon 10,000? Of course we can write many numbers such as 3001 upon 10,000, 3002 upon 10,000, 3003 upon 10,000, and so on up to 6998 upon 10,000 and 6999 upon 10,000. Up to 7000 we can write many numbers. So how many numbers? So we here there are 3999 numbers. So we have started from 3 numbers, then we found 39 number, then again if we have multiplied 100, then we would find 399 numbers. Then after if we multiplied with 1000, then we will get the 3999 numbers in all. Now next, so in this way we can go on inserting more and more rational numbers between 3 by 10 and 7 by 10. यानी कि हम अगर जितने ज़्यादा नंबर चाहिए उतने ज़्यादा नंबर से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. ओके, ये दोनों नंबर्स को, सो वी विल गेट मोर एंड मोर नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स. ओके, नाउ जैसा कि नेचुरल नंबर्स पे ये 2 नंबर थे, ओके, 10 एंड 11. सो 10 एंड 11 के बीच में कोई भी नंबर हमें नहीं मिल पाता था, लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा नहीं है, कोई भी दो नंबर के बीच में हम कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन -1 by 0 and 3 by 10. सो देर आर many rational numbers we can find. So 0 by 10, 1 by 10, 2 by 10
Okay, and many rational numbers we can find between minus 1 by 10 and 3 by 10. So here they have given, if we write minus 1 by 10 as, यानी minus 1 by 10 को minus 1 by 10 को मल्टीप्लाई करो 10,000 से और इससे भी मल्टीप्लाई करो 10,000 से. सो नंबर्स क्या बनेगा, माइनस 10,000 अपॉन 1 लाख, और मतलब माइनस 1 बाई 10 ही अब बन गया है माइनस 10,000 अपॉन 1 लाख. और 3 बाई 10 को सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 और 10,000 से, सो नंबर 3 बाई 10 बनेगा 30,000 अपॉन 1 लाख. ओके, अब ये दो नंबर्स के बीच में हम जितने चाहे उतने नंबर्स निकाल सकते हैं. कैसे, देखिए, now we get the rational numbers. See, after minus 10,000 we have minus 9,999 upon 1 lakh. ऐसे ही सो बहुत सारे नंबर्स हम लोग बीच में निकाल सकते हैं. सो सिमिलरली now we solve the examples. Write any three rational numbers between minus 2 and 0. So how can we write rational numbers between minus 2 and 0? First, minus 2 and 0 we can written as, see, minus 2 and 0. So here they have multiplied minus 2 by 10 and upon there is nothing, so 1 and 10, so minus 20 by 10. Okay, so here they have written minus 2 can be written as minus 20 by 10 and 0 written as 0 by 10. Now next, so we have to find rational numbers between minus 20 by 10 and 0 by 10. So thus we have minus 19 by, after minus 20 we will get minus 19 by 10, then minus 18 by 10, then minus 17 by 10, then many numbers. Okay, minus 3 by 10, minus 2 by 10, then minus 1 by 10, then 0 by 10. So we have minus 19 by 10, minus 18 by 10, minus 17 by 10 and so on up to minus 1 by 10. So between minus 2 and 0, so you can take any of three these. Okay, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 नंबर्स पूछे हैं, तो इसके बीच ये नंबर्स में से कोई भी 3 नंबर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो. Now next, find any 10 rational numbers between minus 5 by 6 and 5 by 8. अब माइनस 5 बाई 6 और माइनस 5 बाई 8 को सेम डिनोमिनेटर का हम बनाएंगे. ओके, कैसे बनाएंगे, सो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे. 6 और 8 का एलसीएम क्या आता है, फर्स्ट एलसीएम फाइंड करेंगे 6 और 8 का. सो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4. नाउ नेक्स्ट 1 2 ज़ा 2, देन 1 3 ज़ा 3. Now what is the LCM? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. So LCM is 24. Okay, so now, so here we have minus 5 by 6. Okay, and now we want to denominator as 24. So by which number should we multiply to get 24? Yes, by 4. So we have to multiply by 4 to the numerator also. Now 6 4 ज़ा 24 and minus 5 4 ज़ा minus 20. So they have written here. Okay, so minus 5 by 6 also written as minus 20 by 24. Similarly 5 by 8. Okay, to make 24 as a denominator they have multiplied with 3 to the both numerator and denominator. So 5 by 3, 5 into 3 15 and 8 3 is 24. So 5 by 8 is written as 15 upon 24. Now we have to find 10 rational numbers between 20 by 24 and 15 by 24. Okay, so we have many numbers, minus 19 by 24, minus 18 by 24, minus 17 by 24, minus 16 by 24, minus 15 by 24 and up to
0 by 24, 1 by 24, 2 by 24, 3 by 24, and there are many numbers, so at last we can write 14 by 24. Okay, because our number is 15 by 24, so we have to write one number before, so 14 by 24. And here, so between from 19 by 24 and up to 14 by 24 we can write many numbers, so we can select 10 numbers, because we have been asked here find any 10 rational numbers. Okay, so we can write any 10 rational numbers between these numbers. So now here we have been given another method. Now another method for finding rational numbers between two numbers is mean method. What is mean? If we want to find mean of two numbers, so what we do, see, if we want to find mean of 2 and 3, so what we do, we add these numbers and by 2. Okay, so we get the number between 2 by 2 and 3. So here 2 plus 3 is 5, 2 plus 3 is 5, and by 2, so 5 by 2 is the mean value of 2 and 3. So 5 by 2 is 2.5, which lies between 2 and 3. Okay, so how do we find mean is एवरेज नंबर. सो अगर दो नंबर्स हमें दिए हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, लेट अस फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2. अब 1 एंड 2 का मीन निकालेंगे, मीन यानी एवरेज नंबर. ओके, सो 1 एंड 2 का मीन कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 2 बाई 2, यानी ये दो नंबर्स को जो दो नंबर दिए वो दो नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे. सो 1 प्लस 2 इज़ 3 बाई 2. ओके, सो इसे 3 बाई 2 को ही यहाँ पे मिक्स नंबर में दिया है. 3 बाई 2 को मिक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1. ओके, सो 3 बाई 2. सो ये सब एक ही नंबर है, 1.5, 1 बाई 2 एंड 3 बाई 2. दिस इज़ द मीन ऑफ 1 बाई 2. ओके, अब मीन नंबर जो है वो नंबर्स के बिटवीन में रहता है, बीच में रहता है. ओके, सो if we want to find one rational numbers between any two numbers, so we can find mean and then write the rational numbers. Okay, now see same examples given here. Find a rational numbers, a rational number यानी एक ही नंबर पूछा है between 1 by 4 and 1 by 2. ओके, सो मीन कैसे फाइंड करते हैं, हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 by 4 प्लस 1 by 2. ये दो नंबर दिए हैं, इसे हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. जो यहाँ पे दिया है. ओके, कैसे करेंगे देखिए. सो 1 by 4 प्लस 1 by 2 कैसे किया है, 4 उसका एलसीएम है. ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 by 4 ही 4 डिनोमिनेटर में है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2. ओके, so answer is 3 by 4, which is written here. Now 3 by 4 we have to multiply by 2. see numbers यहाँ पे ऐसे दिए हैं, 1 by 4 plus 1 by 2 by 2. so first they have solved. see LCM is 4. now 4 को 4 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. सो 1 प्लस यहाँ पे 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 2. नाउ 1 प्लस 2 इज़ 3 बाई 4. डिवाइड बाई 2 मीन्स व्हाट, इफ़ वी कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई, सो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 बाई 1 का हो जाएगा 1 बाई 2. नाउ फाइनल आंसर इज़ व्हाट, 3 1 ज़ा 3 upon 4 2 ज़ा 8. so 3 by 8 is the mean value of 1 by 4 and 1 by 2. okay, so which is written here. सबसे पहले ऐड किया है, बाद में डिवाइड बाई 2 किया है. ओके, नाउ हियर रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन बताया है. 3 by 8 कहाँ पे होगा, 3 by 8 ऑफकोर्स जो दो नंबर दिए हैं 1 by 4 एंड 1 by 2, उसके बीच में होगा 3 by 4. ओके, इसीलिए उसे मीन बोलते हैं. नाउ so we have been asked that find the rational numbers, so
we found the rational number between two numbers, that is 1 by 4 and 1 by 2. So 3 by 8 lies between 1 by 4 and 1 by 2. So by finding mean we can also find rational numbers. Now find three rational numbers between 1 by 4 and 1 by 2. So we have two ways. Okay, 1 by 4 and 1 by 2. How can we find rational numbers? The previous method is 1 by 4 and 1 by 2. Okay, now how can you find? See, multiply. The first method is multiply by 10 upon 10, and here also multiply by 10 upon 10. So this number becomes 10 upon 40, and these numbers become, see, 10 upon 20. Okay, now again multiply this number by 2 so that we get the same denominator. So 20 by 40. Now 10 by 40 and 20 by 40, we can find 11 by 40, 12 by 40, 13 by 40, 14 by 40, and so on. So we find 9 numbers between 10 by 40 and 20 by 40. But now by finding mean method. Okay, so how can you find? See, first we find between mean of 1 by 4 and 1 by 2. So as in the above example, the mean is 3 by 8. Okay, so 1 by 4 lies between 1 by 4 lies between 1 by 3 by 8 lies between 1 by 4 and 1 by 2. Now जैसा कि 1 by 4 और 1 by 2 के मीन अगर फाइंड किया तो 3 by 8 है, जो कि बीच में मीन नंबर है, और 1 by 4 और 1 by 2 के बिटवीन में है. अब हम फाइंड करेंगे ये दो नंबर्स का मीन. तो एक हमें यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, और देन ये दो नंबर्स का मीन फाइंड करेंगे तो एक नंबर यहाँ पे मिलेगा. सो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे, ये एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर. ओके, सो लेट अस फाइंड मीन वैल्यू ऑफ 1 by 4 and 3 by 8. So here they have written, we now find another rational number between 1 by 4 and 3 by 8. ओके, 1 by 4 and 3 by 8 के बीच में. सो इसका मीन फाइंड करेंगे, दो नंबर्स को ऐड करेंगे, बाद में डिवाइड बाय 2 करेंगे. ओके, सो दो नंबर्स को ऐड कैसे किया है? 1 by 4 प्लस 3 by 8 को ऐड किया है. देखिए 8 और 4 का एलसीएम आता है 8. यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स को. सो न्यूमरेटर्स को 2 1 जा 2 प्लस 3. नाउ 3 प्लस 2 इज़ 5 by 8. सो आंसर आया 5 by 8. अब ये डिवाइड है, कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लाई में, इसीलिए यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिखा है. सो 2 by 1 डिवाइड बाय 2 by 1 है, वो होगा मल्टीप्लाई 1 by 2, जो यहाँ पे लिखा है. ओके, नाउ मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, and in denominator 8 2 जा 16. So answer is 5 by 16, which is written here. So one number is, so here we find 5 by 16. Average of 1 by 4 and 3 by 8 is 5 by 16. So which is written here. Okay, 1 by 4, 5 by 16, 3 by 8. Now we have to find number between 3 by 8 and 1 by 2. So let us find mean of 3 by 8 and 1 by 2, which is written here. Now find the mean of 3 by 8 and 1 by 2. अब ये दोनों का नंबर्स का मीन फाइंड करेंगे. सेम सिमिलर वे दो नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे. अब दो नंबर्स को ऐड यहाँ पे कैसे किया है? सी 3 by 8 प्लस 1 by 2 कैसे ऐड करेंगे? सिमिलरली 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा. ओके, अब 2 को 8 करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे तो ये 3 एज इट इज आएगा, 3 1 जा 3. ओके, तो 3 प्लस 3 इज 6 अपॉन 8. सो आंसर इज 6 प्लस 8 इज 3 प्लस 3 इज यहाँ पे 1 by 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो डिनोमिनेटर में 8 आएगा, और 3 प्लस 4 1 जा 4. सो 7 by 8. ओके, 7 by 8 आंसर आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 by 8. एंड देन 2 डिवाइड बाय 2 है, सो हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 by 2, जो यहाँ पे है.
Now 7 by 8 into 1 by 8 into 1 by 2. So how do we solve? So 7 ones are 7 in numerator and 8 twos are 16 in denominator. So the number 7 by 16 lies between 3 by 8 and 1 by 2. So our number line now सबसे पहले 1/4 था, फिर हमने 3/8 फाइंड किया और ये दो नंबर के बीच में 5/16 फाइंड किया. उसके बाद 3/8 और 1/2 के बीच में 7/16 फाइंड किया. सो द क्वेश्चन वॉज find 3 rational numbers between 1/4 and 1/2. So we have done, okay, we found 3 rational numbers between 1/4 and 1/2. So यहाँ पे कैसे किया है देखिए, समझो कोई दो नंबर है, उसके पहले मीन फाइंड किया, फिर ये दो नंबर का मीन फाइंड किया और ये दो नंबर का मीन फाइंड किया. सो इसी तरह हमने 3 नंबर्स फाइंड करे. ओके, नाउ सो विच इज़ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है, सॉरी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बताया है. 1/4 और 1/2 था. 1/4 1/2 के मीन वैल्यू 3/8, देन यहाँ पे 5/16, यहाँ पे 7/16. ओके, सो बाय यूजिंग मीन वी कैन ऑल्सो फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स. ओके, तो हमें टू मेथड है, एक जो डायरेक्ट मेथड थी और ये है मीन मेथड. ओके, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, in the next video we'll see how to solve exercise 1.2. ओके, तब तक के लिए आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सेम क्वेश्चंस आर गिवन, रिप्रेजेंट these numbers on the number line. Okay, 7/4 and -5/6. So you can solve if you can, otherwise we'll see in the next video, okay, how to solve the numbers. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.